Give a minute and we will be getting started, team. So क्या guys, होली का क्या चल रहा है? What's the celebration plan today? दोनों भी अच्छे रेडी होके बैठे हैं यार, वेरी गुड. Yes. सूरज भी एकदम मतलब सही है भाई, नाइस. एंड अकीरा इज आल्सो रेडी विद द फुल सेलिब्रेशन मोड ऑन. ओके ओके, ठीक है. तो I'm going today home for Holi. अच्छा, एंड वेयर इज योर होम? Uh, Near Belgaum, Karnataka, but I'm living in now Kolhapur, Maharashtra, अच्छा, तो in hostel. अच्छा 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 अच्छा. ओके, सो कितना, कब, व्हेन इज योर व्हीकल, व्हेन आर यू गोइंग? गाड़ी कब है? 12 p.m. or 1 p.m. अच्छा, 12-1. सही है. एंड हैप्पी होली, एंजॉय, हैव अ नाइस डे. ठीक है, स्टे सेफ. आंख Same भी to you, बहुत same to you. कुछ तो हो जाता है. ओके, सो आईज में अगर वो चला गया ना होली का, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. सो कलर व्हीलर ढंग से खेलो, मारा मारी नहीं करो. फुल धूम धड़ाका मूड. गुड मॉर्निंग सर. हेलो गुड मॉर्निंग सागर. ठीक है, सो चलो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द सेशन. ठीक है, सो देखो, दिस इज जस्ट अ कॉल की if there is anything to discuss in one-on-one and you guys have raised some queries as well, so chalo, let's discuss it. Let's try to see if we can together come up with some solution. Okay, so we will be starting by one. Okay, so let's start with okay, Suraj. Okay, so yeah, Suraj, so yeah, go ahead. Like, what exactly you want to discuss? What's happening? Anything? Chalo, let's discuss it through. Sir, I'm facing some career-related confusion now. Okay. I'm actually in a competitive field student. Means I'm giving exam of state PCS, CGL, SSC, CGL, like Okay. that. But at the same time, I'm attracted towards Java or Java because and actually my background is BSc Computer Science, and previously when I took admission at 2017, in my mind to become a developer. And after graduation, certain type of people came in my life, and I am attracted towards those people, officer like life. I have attracted toward that life, and I have started the competitive exam preparation. But sometimes Okay. I got confused which field is better. And there is a picture of IT field in my mind that the work is so hectic. When a IT field IT developer goes in office, then it only comes after 10 p.m. or 11 p.m. There is a 12-hour duty. There is no family time. Is that true or wrong, sir? अच्छा, ठीक है, चल, नहीं, एक एक करके. फर्स्ट यू गो लाइक, और so this is the basic confusion कि अभी कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. When actually I'm doing core Java classes by Hare Krishna also for my technical improvement, because I have I think in first 7 session you allotted you suggested all to allot a time for your Like own learning and all. development. So I have allotted 2 hours for core Java, because if I become an officer, but I want to learn it for my ठीक है. फाइन. तो देखो, let me share a few things. Okay, देखो, IT industry in the current times, and even for the next 20 years or even more than that, we don't know how this future goes, but IT industry is something where a lot of money is, and it's a very decent job and easily आता है. मतलब if you get a nice knowledge, market is giving a lot of money. ठीक है, and compared to, मतलब as a employee वाला बोल रहा हूँ. ठीक है, if you are into business and all, तो उसमें तो निकाल लोगे ज्यादा कुछ. ठीक है, but if you are working as an employee in any of the field, so one of a very good field is IT industry. ठीक है, एंड अभी मार्केट ऐसे चल रहा है कि भाई 5 lakhs इज लाइक वेरी इजीली पीपल आर गेटिंग इट. इट्स नॉट इवन अमाउंट, इट्स लाइक दैट मार्केट. ठीक है, इवन फ्रेशर्स को भी पीपल आर गिविंग 4.5 lakhs, 5 lakhs मिल जा रहा है. तो क्योंकि अभी करंटली देखो क्या है, बिकॉज नाउ एवरीबडी नोज बिजनेस इज हैपनिंग ऑनलाइन, एवरीथिंग, द मार्केट इज ऑनलाइन, पीपल आर ऑनलाइन. So money is flowing for the businesses. So if you are an employee of a software developing company, तो पैसा बहुत easily है. And in this field, like increments and job switching and like getting hikes are also pretty great enough.
ठीक है, मतलब 10% तो मिल जाता है. Okay, and if you're really good, if your project is doing really good, so then the chances of even getting like 20%, sometimes 30%, वो सब भी मिल जाती है. ठीक है. So and देखो, compared to a different kind of a stream, let's say officer wali stream है or any other stream, but I'm talking first, if financial thing is calculated, in 10 years in the IT industry, you will be able to like earn double or triple than any other industry. ठीक है, आई एम टॉकिंग मेजोरिटी, एवरेज बोल रहा हूँ, देयर माइट बी एक्सेप्शंस ऑलवेज, बट ऑन एन एवरेज अगर 10 साल तक बहुत अच्छा, इफ यू रियली वर्क हियर, क्लाइंब अप द लैडर, मेक मोर मनी, तो पोजीशन भी बहुत अच्छा है, मनी वाइज आल्सो लाइक ट्रिपल कमा लोगे, मतलब जितना 30 इयर्स में इन अदर जॉब्स यू विल डू, उतना ही 10 साल के अंदर आईटी दे देगा. ठीक है. एंड देखो, व्हाट आई फील इज के यस इट इज, देखो, इट डजंट हैव दैट, सो दिस इज अ एडवांटेज ऑफ दिस इंडस्ट्री. ठीक है, शॉर्ट टाइम में मोर मनी, you can complete your plans or start investing, get a home, and loan जो भी है फट 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 खत्म हो जाएगा. ठीक है, नाउ मार्केट में लाइक 8 lakhs 9 lakhs 10 lakhs मिल जा रहा है फॉर लॉट ऑफ पीपल विथ ईज. ठीक है, so if you are having 3-4 years of experience and you are really good, so you can start attacking that in the market, prepare well, get the job, and then मिल जा रहा है. ठीक है, so if it is money wise, so yes, IT industry is the best industry to be. If you are just good, talented, capable enough, the job is coming. ठीक है. Now the other problem is कि what you said about stress levels. ठीक है. Yeah. देखो देखो, one thing is there, सूरज, कि no matter what field you go, so it's not just about IT industry. ठीक है, no matter whichever field you go, if there is expectation from the job and people are not capable enough or talented enough or skilled wise equipped enough, तो उन लोगों को वहां पे प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, बीट वॉट एवर इंडस्ट्री, देयर इज एक्सपेक्टेशन कि भाई यू हैव टू परफॉर्म लाइक दिस, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, सो देन स्ट्रेस आएगा. ठीक है, तो यस, आईटी इंडस्ट्री में भी दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर, सो पीपल विल एक्सपेक्ट, इट इज अ पेसी इंडस्ट्री, एवरी 2 weeks में रिलीज करना पड़ता है, तो द एक्सपेक्टेशंस थोड़ा डिमांडिंग होता है. ठीक है, but the thing is कि don't look at it from that perspective कि life will be problematic with it. ठीक है, ये देखो कि भाई how to have more skilled and trained and like learn quickly so that you can deal with it with ease. Okay, because देखो, जब IT इतना पैसा देने को तैयार है, तो then accordingly it expects people to also perform to that level. ठीक है, and so I would say कि don't be afraid, stress, pressure ये वो के लिए, if you have the right skills, you will be able to deal with that easily. उसमें पंगा नहीं होगा. ठीक है, एंड देखो, सिंस आई हैव सीन द आईटी इंडस्ट्री इटसेल्फ, तो आई नो कि यहाँ पे इट्स लाइक 10 years 15 years with ease you can do very nicely. ठीक है, on the other hand, let me even say कि there are different companies जहाँ पे different kind of roles will be there. Sometimes the work pressure in some companies, some projects, it will be too hectic. ठीक है, in some other projects it will be a bit relaxed. ठीक है, so it completely depends on project to project. देखो क्या होता है, फॉर मेनी बिग कंपनीज, ओके, आई हैव सीन इट, आई हैव, माय फ्रेंड्स आर वर्किंग फॉर मेनी बिग कंपनीज, दे वर्क विथ बैकअप्स. ओके, नथिंग बट टीम का काम होता है, ओनली लाइक मे बी 5 people कैन फिनिश द वर्क, बट स्टिल दे हायर 8 people. ओके, कि if somebody goes on a leave, the client should not be impacted, so all those things. So just imagine if the work of 5 people is supposed to be done by 8 people, on an average people have a very chilled life. So it's not always true that every project, every like company will be hectic. It depends on what projects you are into. Okay, but there are projects where public is having a very peaceful time also, and then with shared load with one another, वो भी चलता है. Okay, so don't have stress as your decision making. So उसको overcome करने के लिए know it, talent चाहिए, you have to work hard, and once you have the right skills, you will be able to get in pretty nicely. Okay, and money wise it is good. And with regards to this also good, and देखो एक level of professionalism is there. ठीक है, so if you go in, I have not seen other industries, but what I feel is कि यहाँ पे professionalism, you will find really good decent people who are like helpful, and काम की बातें करने वाले लोग is like very nicely accessible here. So all the people who have become successful, they keep chatting, and technology इतना accessible है, so you can just call to anybody. So networks banna is very good because very educated, responsible people are there in this industry,
and who knows the value of things, and they are very easily accessible. Guidance bhi milna is comparatively easy. And if you understand LinkedIn and all these platforms, these are created by the software world itself, so it will be a very nice support for one another as even the system evolves. ठीक है. Now the एक खाली downside में बताता हूँ इसका. ठीक है, compared to let's say if you are attracted towards some other industry which is let's say officer wala role and things like that. देखो, with that you get job safety for like long time. Okay, let's say अगर 30 साल तक का, right? I think it runs even for till retirement तक चलेगा. Later I don't know अभी what is the pension plans and all that, but yes, long time. And that's where people were like government job ले लो, government job ले लो. ठीक है. The reason is there is a assurance for entire lifetime कि work will be realized, you get a nice family time, work time, money will be coming. देखो, but what I feel is maybe for the last generation it might be good because people were newly opening up jobs. ये वो भी ज्यादा लोग नहीं करते थे in the previous time. There was lot of like hard work, labor work था. It was no internet and all this. But देखो, what I feel is कि a bit of risk is required in life. Okay, थोड़ा सा एक कुछ तो चाहिए कि not everything is safe. देखो, तो IT में रिस्क ये है कि maybe 10 years, 15 years, 20 years you will make a lot of money. ठीक है, but what would you do after that? Okay, there are companies, okay, like let's say IBM or any other big names, their people are there till even 30 years of experience. Okay, but I have like seen a lot of people in the industry and I don't see like 30 saal wale zyada log. The percentage of people with having like 30 years of experience in the industry is comparatively less, and if they are at the very top position somewhere. Okay, so what will people do after 20 years of experience, because they are not very common in the industry. So then एक career planning भी होनी चाहिए. Okay, so earlier I'll make a lot of money, I'll do investments ये वो, but what after that? Do you want to be a board of director somewhere, or do you want to like get into a top like the designations which are very few? Okay, but what happens to the majority of the people? I'm not much sure. Maybe they choose to go like okay, एक parallelly कुछ business setup कर लेंगे और rents पे घर flat चला देंगे और real estate में चले जाएंगे. So I think people do all this packaging work. Okay, so they make early money, they do nice investments, and as they go 20 years 25 years tak bhi, but after that I think it becomes a choice. Because as you go through, what will happen is a person with 30 years of experience is doing some work, and there is another guy with 20 years of experience. On an average he will also be able to do that work. Okay, and maybe somebody with 15 years of experience might to some extent be able to manage the work properly. इतना expertise नहीं, so just understand कि फिर maybe that's how the career is going to go. So you need to be very nicely planned and executed. ठीक है, और वर्क लाइफ बैलेंस पे थोड़ा बात करते हैं सूरज. ठीक है, देखो पॉइंट इज कि इनिशियल 4 साल तो बहुत काम करना पड़ेगा इफ यू आर इन IT इंडस्ट्री. ठीक है, because if people and I'm saying कि not many people do that, and if they are not doing it ना, फिर आगे लाइफ में struggle is always there. Okay, but if you choose a path के initial 4 years तक बहुत काम करोगे, okay, फिर उसमें don't care about anything else, थोड़ा फैमिली को टाइम दो, बट बाकी लर्निंग पे ही फोकस करो. इफ यू डू दैट फॉर इनिशियल 4 years ऑफ योर एक्सपीरियंस, तो फिर फ्यूचर बहुत सेट हो जाएगा. फिर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, योर थिंकिंग इतना ग्रो हो जाएगा कि इवन विथ लेट्स से हाफ ऑफ दैट टाइम, 5 घंटे के अंदर यू कैन फिनिश एंटायर डेज वर्क. ठीक है, बिकॉज इनिशियली यू नो यू आर राइटली स्किल्ड, टेक्निकली भी काफी अच्छे हो, and then after that with that knowledge you will realize future becomes very easy. Even with half hours, like 5 घंटा काम करोगे, 8 घंटे का काम हो जाएगा. And then yeah, that attitude of quick learning will always be with you, which will continue forever. ठीक है, so initially don't try to think about balance. Try to give your everything. Weekends काम करना पड़े तो करो, late night करना पड़े तो करो, छुट्टी पे, मतलब work for yourself, not because की कंपनी के लिए. It's like अगर 4 साल खुद पे अच्छा इन्वेस्ट करोगे, लर्निंग, प्रोजेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, तो फिर फ्यूचर फुल लाइफ लॉन्ग तक बहुत हेल्प होगा. ठीक है, एंड कांस्टेंट लर्निंग ये वो करते हुए, तो आई थिंक फिर आगे जाके यू कैन वेरी नाइसली बैलेंस. अभी 5 घंटे में 8 घंटे का काम हो जा रहा है, सो यू कैन देन गिव टाइम फॉर ऑल द अदर थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, एंड मेनी कंपनीज, नाउ लेट मी टेल दिस थिंग. ठीक है, इंडिया में अभी तक दीज रूल्स आर नॉट देयर, बट इन लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज दे हैव मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस के 7 बजे के बाद नोबडी शुड बी देयर इन द ऑफिस.
सीधे मेन एसी सप्लाई ऑफ कर देंगे, लाइट्स को ऑफ कर देंगे. एंड इफ दे आर आस्किंग द एम्प्लॉयज टू स्टे लेट, दे हैव टू गिव जस्टिफिकेशन टू कि क्यों चाहिए. ओके. एंड पीपल आर बिल्ड एक्स्ट्रा, मतलब उनको लाइक इवन कॉस्ट वाइज दे ओवर टाइम जैसे होता है, एंड दे आर सपोज टू बी पेड एक्स्ट्रा. ठीक है. अब वी डोंट नो वेदर दिस काइंड ऑफ कल्चर विल कम हियर, बट द आईटी इंडस्ट्री एंड ग्लोबली पीपल हैव अडॉप्टेड टू दिस कि भाई देयर हैज टू बी अ वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है. वन ऑफ माय फ्रेंड वेंट टू लंडन. ठीक है. तो ही वर्क देयर फॉर 6 months फॉर सम प्रोजेक्ट. व्हाट ही वाज सेइंग इज दे स्टार्ट लाइक सुबह 7 बजे ऑफिस, 8 बजे ऑफिस, एंड बाय 4 PM 5 PM पूरा काम खत्म करके दे वर्क वेरी डेडिकेटेडली. ऐसा नहीं कि टी ब्रेक पे भी नहीं जाते. ओके. तो दे आर लाइक दैट प्रोडक्टिव पीपल. ठीक है. सो दे वर्क वेरी डेडिकेटेडली सुबह से शाम तक, एंड आफ्टर दैट 5 जैसे बजते सीधे लैपटॉप विपटॉप बंद करते सीधे घर निकल जाते. एंड देन दे हैव द रेस्ट ऑफ द 4-5 hours ऑफ द डे विद देयर फैमिली, मूव अराउंड, दिन भी रहता है. तो मतलब पीपल हैव रियली अडेप्टेड. सो आई थिंक इट इज मोस्टली अबाउट इट्स पॉसिबल टू बैलेंस इट. थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. सो बट इफ यू आर रियली स्किल्ड और नॉलेज अच्छा हो गया, प्रोडक्टिव बन गए, तो यू कैन सेव योर टाइम नाइसली. बट इफ यू आर नॉट प्रोडक्टिव, 2 घंटे के काम को 1 दिन लग जा रहा है, तो देन सच लाइफ इज गोइंग टू बी ऑलवेज पेनफुल. ओके. सो आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रुथ. तो लर्निंग नॉलेज अच्छा रहा तो अच्छा रहेगा. सो देखो, दिस इज व्हाट आई, माय ओपिनियन. इफ आई एम एट योर प्लेस, देखो आई डोंट नो द अदर साइड अबाउट योर द ऑफिसर लाइफ एंड ऑल. सो यस, रिस्पेक्ट होता है, वो सब होता है, बट पता नहीं, आई डोंट नो, सम आई फील कनेक्टेड मोर विद द आईटी इंडस्ट्री, इसलिए मैं यहाँ पे रह गया हूँ. And there is another thing. If I stay with the people who are in the IT field, I will happily do it work. But the people around me, someone is officer, then I will compare myself with them. अरे उसको तो फैमिली के लिए टाइम मिल रहा है, अरे यार उसकी लाइफ तो उससे बहुत अच्छी चल रही है, 10 बजे जाता है, 5 बजे आता है, रिस्पेक्ट है, हर फंक्शन में जाता है, वो उसको रिस्पेक्ट मिलती है. हमारी लाइफ तो वो लैपटॉप की साइड में ही रहेगी, ऐसा लगता है. नहीं नहीं, आई थिंक थोड़ा सा लेट दिस थॉट्स ग्रो इन यू. ठीक है. देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि टाइम मिल रहा है, इट्स लाइक व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग. एंड यस, ऑफिसर्स ये वो अच्छा काम ये वो करते हैं. ठीक है. बट कोडिंग एंड ऑल में इट्स हैविंग इट्स ओन एक्साइटमेंट. It depends upon what you like. Don't compare work-life balance as a factor for making this decision. Okay? Consider quality of work. If you like really the job which those people do, if you feel कि अच्छा interesting है, challenging है, and if you connect with that, then that would be the stream. But don't consider कि कितना family time दे रहे, कितना वो मिल रहा है, because you can make that in both the industries. ठीक है. There will be officers जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, they will not abide by these rules कि कब आना है कब जाना है. It's a choice. So in both the market, average people will there, A players will be there. IT में भी मिलेगा उनको, वो लाइफ में भी मिलेगा. ठीक है. जो ज्यादा करेगा लाइफ विल रिवॉर्ड देम मोर, जो कम करेगा दे विल स्ट्रगल. ठीक है. सो मतलब जस्ट डोंट कंसिडर दैट की टाइमिंग एंड ऑल. रिस्पेक्ट ये वो भी अच्छा है, बट व्हाट एक्साइट्स यू थोड़ा उसको सोचो पहले. मतलब कोडिंग का अपना एक्साइटमेंट है, वो जो आपका अपना है, बट इफ यू फाइंड कि हाँ नेक्स्ट में 10 years वो काइंड ऑफ जॉब जो भी करते, इफ दैट इंटरेस्ट यू, तो जाके जाने में मतलब है. अदरवाइज फिर थोड़ा एम्प्टी एम्प्टी लगने लगेगा. अरे सुबह से 10 बजे से मतलब 10-10 घंटा बैठ जा रहा हूँ, एंड इफ यू आर नॉट लाइकिंग व्हाट यू आर डूइंग ना, तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी. भले ही घर पे भी चले जाओगे, बट यू विल बी लाइक खाली टाइम कट रहा है. ठीक है. सो थोड़ा सा अपना लाइकिंग को देखो. एंड another one input की, देखो, if you get in the IT, you will find IT friends. So अभी you are in that, so अभी तक नहीं है, इसलिए you are thinking like this. Maybe if you are getting in IT, you will find IT friends, so you can get that kind of circle also. ठीक है. अभी Another question is, sir, in government field there is a satisfaction of working for people, working, solving their problems, giving service to them. In IT field, how can you manage for satisfaction, and what excites you? देखो, there is always this thing कि you need to have a very big mind, क्योंकि it is not direct service. मतलब ऐसे नहीं कि अभी अपन कुछ कर लिया and हो गया. ठीक है. But how big companies do is they have a vision कि भाई why this company exists, what do they do. So you just imagine, okay, कि and it's different than regular service. Okay, but गूगल हो गया, एप्पल हो गया, तो उन लोग का विजन था कि भाई लोगों का लाइफ कंफर्टेबल करना. तो दे हैव डन अ लॉट ऑफ सर्विस फॉर द वर्ल्ड.
टेक कंपनीज आर डूइंग अ लॉट ऑफ सर्विस फॉर द वर्ल्ड. गूगल मैप जैसे आ गया, लाइक एंटायर ग्लोब का कनेक्टिविटी सिस्टम को ही चेंज कर दिया. ठीक है. नाउ अगर आईटी इंडस्ट्री वुड नॉट हैव बीन देयर, रिमोटली ये सब कनेक्शंस पॉसिबल ही नहीं होते. सो दे हैव देयर ओन फ्लेवर ऑफ सर्विस, बट इट्स नॉट लाइक डायरेक्टली लोगों को दे रहे. Okay, and similarly what is happening is, देखो, every business wants to have a project. So be whichever project you work for, if you put your thinking there ki bhai, okay, this is the project and this is how every business will serve the world only, right? And in the IT industry, whatever product you design or a software you design, that is eventually going to be used by the world only. So it is going to indirectly offer a service. You build an application which the world uses, and that's where it's a service. But it is a very indirect path. ठीक है. तो दोनों इंडस्ट्री सर्व करे, बट यस, इन लाइक गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल, इट इज डायरेक्टली विजिबल कि यू टॉक टू देम एंड यू हेल्प देम काइंड ऑफ. इसमें इनडायरेक्टली होता है, बट टेक्नोलॉजी इज रियली गिविंग अ लॉट टू द वर्ल्ड बैक. तो थोड़ा सा वो थिंकिंग को वहां पे रखनी पड़ेगी कि भाई अपन जो एप्लीकेशन बना रहे, पीपल इन द वर्ल्ड विल यूज इट एंड दे विल बी बेनिफिटेड. हाँ, ठीक है. बट सूरज, आई थिंक स्टिल ये थॉट्स को थोड़ा और चर्न होने दो अपने दिमाग में. ठीक है. बट मेक अ डिसीजन अर्ली. ज्यादा टू एंड फ्रो मत करते रहो. एक देखो, प्रोज एंड कॉन्स इवेल्युएट करो दोनों स्ट्रीम्स के. देखो, आई नो देर इज वन टेक्निक की एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है, एडवांटेज एक लेफ्ट साइड राइट साइड कॉलम बना दो. दो ऑप्शंस के बीच में अगर चूज करना है तो दिस इज वन ऑफ अ टेक्निक. लेफ्ट साइड में जस्ट राइट आईटी इंडस्ट्री, राइट साइड में राइट ऑफिसर रिलेटेड, एंड दोनों के बीच में एडवांटेजेस ऑफ आईटी, डिसएडवांटेजेस ऑफ आईटी, एडवांटेजेस ऑफ दैट जॉब, डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट जॉब. वो चारों सेक्शंस लिखो एंड नाउ वेट देम अप कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है तुमको. ठीक है. एंड थिंक डीपली. इट्स नॉट कि 5 मिनट में डिसीजन करना, इट्स योर करियर डिसीजन. भले ही अगर एक दिन भी जा रहा है वो एक्टिविटी को कर लो. अगर इफ यू वांट कि 2-3 दिन के अंदर यू वांट टू रिविजिट बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन, टॉक टू अदर पीपल आल्सो एंड देन ऐड दोस थिंग्स. बट अच्छा डिटेल टाइम लगाओ, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द फील्ड लगाओ, एंड देन वंस यू सी एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ आइज, देन मेक अ डिसीजन. एंड एक बार जो डिसाइड कर लेंगे उस पे लग जाओ. ठीक है. बिकॉज आई सी दैट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ कि अगर फाइनलाइज नहीं करोगे तो बहुत टाइम फिर स्विचिंग जाएगा, माइंड भी स्प्लिट होगा. बट एक बार एक फिक्स कर दिए तो उस पे फिर निकल लो आगे. एटलीस्ट नेक्स्ट 5 साल के लिए पलट के मत देखो. अब वॉट एवर यू पिक बेसिकली. ठीक है. ओके. तो डू दिस. अभी होली पे जा रहे हो तो घर वाले भी रहेंगे, उनसे भी बात करो, फ्रेंड से बात करो. बट और actually in my family there are a lot of government job employees, so that my mind goes towards government job due to these people, but I'm not actually thinking from my perspective how I think about that. And नहीं, ये टेक्निक अप्लाई those people उनके माइंड में होता है कि आईटी फील्ड सिर्फ पैसों के लिए काम करती है, पैसा कमा के क्या करोगे, सिर्फ लाइफ में कोई बैलेंस भी होना चाहिए, ऐसा हो. नहीं, देखो, यू लेट योर माइंड इवेल्युएट इट. ठीक है. देखो, डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो अपन वी कैन नॉट इंटरफियर इन देयर थॉट प्रोसेस बिकॉज दे थिंक लाइक दैट, देयर सबकॉन्शियस माइंड हैज बिकम दैट. ठीक है. अगर आईटी नहीं होता तो वर्ल्ड वुड नॉट हैव ग्रोन टू वेयर इट इज राइट नाउ. ठीक है. एंड पैसा मिल रहा है बिकॉज डिमांड इज देयर इन द मार्केट. ठीक है. डिमांड है, पीपल आर नीडेड, स्किल्ड पीपल आर नीडेड, एंड इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री. आईटी में लोग मजाक में नहीं लेते, लाइक बहुत काम करते हैं. आई हैव सीन लाइक वेरी ग्रेट पीपल इन द इंडस्ट्री. ठीक है. सो लाइक डोंट डिवैल्यू इट एंड डोंट लेट, मतलब या आई हैव सीन द अदर साइड, और इंडस्ट्री इज रियली गुड, मतलब इट्स नाइस. ठीक है. एंड मनी इज नॉट द मोटिवेशन फॉर मेनी पीपल. दे आर लाइक, आई हैव, ओके, देयर हैव बीन केसेस, पब्लिक सामने से मेरे को आके बोली है ड्यूरिंग अप्राइजल कि लास्ट ईयर मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, आई डोंट वांट हाइक दिस ईयर. आई हैव सीन सच पीपल, आई हैव वर्कड विद सच पीपल. खुद आके बोल रहे भाई 0% हाइक दो बिकॉज मैंने अच्छा काम नहीं किया. ठीक है. एंड आई वाज रेडी टू पे हिम मोर बिकॉज कुछ इन्फ्लेशन, ये वो एडजस्टमेंट, बट ही इज लाइक नहीं चाहिए मेरे को, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव. सो इट्स लाइक, एंड देयर इज लॉट ऑफ क्राउड मैन. आईटी में कितने लोग हैं, तो डिफरेंट नेचर ऑफ पीपल विल बी देयर. ठीक है. सो जस्ट यू मेक अ राइट डिसीजन व्हाट यू रियली वांट विथ योर लाइफ. ठीक है. यस, यू कंसिडर योर एनवायरमेंट इनपुट्स, बट यू मेक अ डिसीजन. एंड एक बार कर लोगे उस पर स्टिक रहो, अदरवाइज फिर प्रोग्रेस नहीं होगा.
ठीक है। हाँ, कभी कभी लगता है ऐसा, यार क्या यार, सोच लूंगा, लेकिन अभी मेरे को ये दो पत्थर पे पैर रख के नहीं चलना है अभी। नहीं नहीं, वो बहुत स्ट्रगल हो जाएगा ना, पता है, दो बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स है, एंड फिर या किसी में फोकस नहीं रहेगा तो दोनों में मिक्स मिक्स हो जाएंगी चीजें। ठीक है, फाइन। तो चलो सूरज, थैंक यू फॉर दिस टाइम, और थैंक यू, 25 मिनट्स हो गए, ठीक है, अप्लाई दैट मैन। हाँ ठीक है, थैंक यू, आई विल डिसाइड। या ठीक है। Okay, so if you want, yes, you can stay and listen to other people also, so you'll get some information from there. ठीक है। And one last sentence I want to talk. Uh-huh. Before the life transformation 40 seasons, I have joined because I will find my answer to what I choose. अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं देखो, पॉइंट इज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का कोर ये है कि भाई यू नीड टू मास्टर योर टाइम एंड थिंक इट क्लीनली फॉर योरसेल्फ। ठीक है, इट विल गिव यू द टूल्स, टेक्निक्स एंड अ लाइफस्टाइल which where you can really start thinking clean and get changes in yourself। ठीक है, एंड अभी देखो दैट्स व्हाट गोल वाला जो पॉइंट है वो होता है, इफ यू अप्लाई दैट प्रॉपर्ली, यू शुड गेट क्लैरिटी के लाइफ में क्या चाहिए। इफ यू हैव नॉट डन दैट थॉट प्रोसेस, तो दैट मीन्स पहले वो थॉट प्रोसेस करके गोल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट्स अ बेसिकली लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, एंड इन दैट लाइफस्टाइल देन यू मेक चॉइसेस के कैसे लेके जाना होता है। And last question, हम्म। if I want to go in IT industry, I have 23 and 8 months, like in few days I will complete my 24. Is it too late to join IT industry or? नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो देखो, ट्राइज एज अ फ्रेशर, अगर हो जा रहा है तो इट्स फाइन, नहीं तो 2 साल का गैप लगा के ट्राई इट लाइक दैट, एंड देन यू विल बी कंज्यूम। ठीक है, पंगे नहीं होंगे। सो देर आर बिग बिग पीपल ऑल्सो, एंड 24 साल इज नथिंग। ठीक है, तो इट जस्ट स्टार्टिंग ही फेज है। सो And can we become a product-based engineer in for Fortune 500? Is there any chance, or एनीथिंग, only NIT or IIT level people can only go there and crack the job? नहीं नहीं नहीं, देखो वैसे कुछ नहीं रहता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट एज यू ग्रो इन योर करियर फॉरवर्ड, थोड़े कुछ एडिशनल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से डिग्रीज भी एक्वायर करते रखो, एजुकेशन को भी बढ़ाते रखो। ठीक है, सिर्फ बीएससी कंप्यूटर साइंस के बेस पे लाइफ लॉन्ग नहीं, मतलब प्रमोशंस में कभी कभी पंगे होते हैं। ठीक है, सो Okay, पैरेलली इन अ लॉन्ग रन तो एक एक कुछ हर में भी 2-2 साल का एक रिमोट कुछ वर्चुअल कोर्सेज और पीजी कुछ तो करते चलो। means MC, etc. या कुछ तो कुछ रिमोट वाला लेके पैरेलल जॉब चल रहा है वो वाला भी कर लोगे, तो जैसे डिग्रीज और बढ़ते जाएंगी, दैट विल गिव वेटेज। Okay, okay. हम्म, ठीक है। ओके ठीक है, चलो सूरज, Thank you, थैंक्स, thank you, नाइस टॉकिंग टू यू मैन। या thank ठीक you. है, ओके Have a nice ठीक day. है, या सेम टू यू मैन। ओके ठीक है, नाउ अखिला, लेट्स गो टू योर टॉपिक। हेलो, या यूर ऑन म्यूट अखिला। I will go to the points. Much won't lag. हम्म Okay. Nowadays, like everyone is earning money. It's not a big thing. Like it's like not a saving the money is like art. I do believe because nowadays, because any work you can earn the money, but the saving money in the future, it gives the stability and the security and the what will say support in future. So after getting job, how to get good financial stability for my family and my which are the people coming in for the generation people. नहीं नहीं, वेरी गुड, एंड गुड दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन राइट एट द एंट्री ऑफ योर आईटी करियर। ठीक है, बिकॉज मेनी पीपल वेस्ट अ लॉट ऑफ देयर टाइम, लॉट ऑफ मनी, एंड फिर बाद में जाके दे आर लाइक अरे ये करना, आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव डन दैट। ठीक है, सो आई Yeah, थिंक because I have seen my in my family. So though my father is good also, not अच्छा saved in a good manner. So I अच्छा, learned from his. Yes, in future my people should not suffer to this वेरी point. गुड वेरी गुड, या दैट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यस, आई विल बी शेयरिंग टू माय मैच्योरिटी वॉट एवर आई कैन गिव इनपुट्स टू यू। ठीक है, on top of that I would recommend ki parallelly, yes, you should also, there are a lot of financial books written which will give a lot of techniques of how to organize money. ठीक है, so yes, you have to educate yourself for saving and all that, but देखो, my conclusion after whatever, wherever I am, whatever I have explored, ठीक है, yes, first, money will come if you're really hard working, so that becomes your primary source of income.
and you always need that, so you have to keep working hard, and whatever you do, primary source of income will be coming. Okay, देखो, people say कि whatever income you get, you split it into multiple sections. ठीक है, you split it into multiple sections. One is for yourself. ठीक है, one is for saving an emergency. कुछ भी इमरजेंसी हो गया तो वहां पे इवन हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल दैट कम्स, प्लस सम मनी इन केस ऑफ इमरजेंसी हैपेंस. ठीक है, वन विल बी इन्वेस्टमेंट्स. Okay, and other section will be contribution and like donations and charity and giving back to the other people needy के लिए. Okay, and after a lot of analysis people have drawn such kind of conclusion. एक पोर्शन होता है अपना डे टू डे हाउस एक्टिविटीज के लिए, यू हैव टू डेडिकेट सम मनी देयर. एक पोर्शन होता है कि भाई इमरजेंसी फंड्स हैज टू बी रेडी, कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग ऑल ऑफ अ सडन, डू यू हैव सम बैकअप्स एंड यू कैन अरेंज समथिंग क्विकली. ठीक है, देन अनदर फंड होता है कि भाई विद दैट मनी आर यू इन्वेस्टिंग. ठीक है, एंड द नेक्स्ट फंड कम्स इसके भाई थोड़ा चैरिटी, सोशल सर्विस एंड वो काम में लगाओ, ताकि सेटिस्फैक्शन भी रहता है एंड लाइक इट इज प्रॉपर. ठीक है, on top of these sections people say कि भाई one portion of your amount should always be applied in self learning. ठीक है, that's where people say ना खुद पे invest करो, तो you have to take online courses, you have to educate yourself, you have to do, let's say जिस अभी सूरज को बोले कि भाई वो PG and all that kind of thing लो. ठीक है, so with all these things happening you have to put yourself in investment. without learning फिर बाकी कुछ भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, एंड उसके लिए भी एक पीपल तो से 10% स्प्लिट कर दो एंड ऑल दैट, बट आई वुड रिकमेंड कि यू फिगर आउट बेस्ड अपॉन योर सर्कमस्टेंसेस कि हाउ मच परसेंटेज शुड गो वेयर वेयर. ठीक है, बट नाउ वंस यू हैव डिसाइडेड ऑल दीज सेक्शंस, ओके, ट्राई टू थिंक वेरी स्मार्टर कि भाई अपना डेली एक्सपेंसेस जो है हाउ टू रिड्यूस दैट. क्योंकि अगर खुले हाथ से पैसा खर्चा कर रहे हो, लाइक अननेसेसरी चीजें यू आर ऑर्डरिंग इट, यूजिंग इट, it is definitely going to empty your pocket very soon. ठीक है, so how can you reduce your day-to-day expenses? तो not compromising but unnecessary wastage को निकालना, try to reduce that portion and add more as part of the other brackets. ठीक है, if you are able to get this thing and then stay consistent with that and month by month ये splitting होनी चाहिए. नॉट लाइक कि 6 महीने में एक बार करोगे, बाकी सारा सैलरी वी आर जस्ट अक्यूमुलेटिंग एंड फिर एक दिन कभी करते हो. एवरी मंथ में ट्राई टू डू दिस स्प्लिटिंग. ओके, बिकॉज देखो देर इज वन ऑब्जर्वेशन, देर इज वन पब्लिक ऑब्जर्वेशन की इफ यू रियली अलोकेट सम मनी फॉर यूसेज, ओके, लेट्स से अगर बोले कि भाई 30,000 के अंदर मेरे को मेरा मंथली चलाना है और 15,000 में मेरे को मंथली चलाना है. ठीक है, इफ यू डिसाइड दैट, okay, so what happens is somehow the brain will figure out and try to occupy that money. Okay, and you will not do unnecessary expenses. So थोड़ा ये ट्राई करो कि जो डेली एक्सपेंसेस है, मंथली वाला जो खर्चा आता है, reduce that, block it nicely and rest of the money को then put it into all these investments. ठीक है, देखो let me tell you कि कितना भी I have earned in my life, अभी 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, ठीक है, मंथली बेसिस पे 10,000 से ज्यादा मैंने खुद पे डाला ही नहीं, नेवर. ठीक है, जब स्टार्टिंग जॉब कर रहा था वो टाइम पे भले ही मेरी 15,000 सैलरी भी रहे, तो 10,000 से ज्यादा मैंने कभी लिया नहीं है. इफ यस गोइंग फॉर वेकेशन ट्रिप्स वो टाइम पे कुछ ले लेंगे, बट दैट्स मीन इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ओके, एंड अगर मैं 10,000 भी अलोकेट कर रहा हूँ तो फ्रॉम दैट 10,000 आई हैव नेवर वेस्टेड एनीथिंग. वो 10,000 से मैं मेरे गाड़ी का पेट्रोल डालूंगा, मेंटेनेंस डालूंगा, प्लस आई विल डू ऑल दीज ऑनलाइन कोर्सेज. I've subscribed for everything. LinkedIn का प्रीमियम पैकेज ले लिया है मैंने, ठीक है, और दूसरे जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ऑडिबल का ले लिया है, ऑडी बुक्स का ले लिया है, कीप परचेसिंग बुक्स. तो ये 10,000 में ही आई कीप सेल्फ लर्निंग. तो मतलब मैंने खुद पे क्या किया है, आई डोंट हैव मच ऑफ इंटरेस्ट इन शॉपिंग, ये वो चीजें सेल्फ लर्निंग पे डाल दिया है. बेसिक नीड्स सेल्फ लर्निंग, कभी खाना रहा बाहर ये वो तो खा लेंगे, बट या दैट्स व्हाट. उससे ज्यादा जितना भी कमाए आई जस्ट ऑर्गेनाइज इट इनटू दीज अदर डिविजन्स. ठीक है, and if you start doing it right from initial times, reduce this consumption, day to day consumption expenses, over kharcha mat karo, it's waste anyways, and then rest of the जो भी money बचता है, देखो I'm not saying underutilize and live like poverty वाली life, enjoy, have fun, vacations वो सब करो, but unnecessary चीजों को जरूरत नहीं है तो don't really go for it.
ओके, अब आई डोंट रियली कनेक्ट कि भाई 1-2 लाख के लैपटॉप, फोन, मोबाइल लेना, डिवाइसेस लेना, इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड, इट्स अ चॉइस. अभी व्हाई डू यू रियली वांट टू हैव दैट, एंड लाइक 20,000 का फोन भी काम कर रहा है, व्हाई हैव लाइक 1 लाख का फोन. ठीक है, यस पीपल विल हैव चॉइसेस, बट थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा. यू नीड टू गेट दैट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द रियलिटी. ठीक है, बट इफ यू रियली आर पैशनेट एंड ऑल, तो कमाओ ज्यादा एंड देन यू अप्लाई इट. ठीक है, so this is what will be my suggestion, ki split up your amounts in different thing, reduce your expenses. ठीक है, and दूसरा थोड़ा सा taxes को in the beginning of your life थोड़ा plan it properly. ठीक है, तो taxes में जो भी होते हैं sections, so apply it properly so that you can save some money, you can get some money back. So even you need to focus on that, क्योंकि taxes में भी 1-2 लाख रुपए तो बच ही जाएंगे अगर कुछ तो करोगे तो. ठीक है, so there are sections to study the taxing properly and do savings according to the taxing also. So it will ask for some mutual funds or fixed deposit, and like multiple sections will be there. Education related taxes will be there, health related taxes will be there. So if you are taking a home, uske bhi rahega. So if you can put money there, it's an investment also, plus you will be saved with your taxes. So agar if you can focus on that, plus then go comes to the investment part. ठीक है, so it's a big area of investments कि क्या क्या करे, कैसे कैसे करे. So you have to learn those things nicely. Shares होता है, real estate होता है, gold होता है, silver होता है. ठीक है, so there are all these things where you can really start excelling and applying. ठीक है, so this is what it is. Split your money into different sections, reduce your monthly expenses, or work as hard as possible to grow this primary income source. तो इतना चलेगा. ठीक है, now what happens is as you grow along with time, the investments which you have done, they will start giving you returns back. ठीक है, तो वो भी एक इनकम सोर्स बन जाता है. ठीक है, दैट्स वेयर पीपल, सम पीपल यूज इट एज पैसिव इनकम वाला चीज है कुछ तो. ठीक है, तो वहां पे डाल के वो खुद से रोटेट होने लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अभी इन द करंट वर्ल्ड यूडेमी कोर्सेज आर समथिंग लाइक दैट. एक बार यूडेमी का कोर्स बना दो, डाल दो, अभी पीपल जैसे खरीदते चलेंगे फॉर एनी टाइम इन फ्यूचर, you'll keep getting money, so you're not working actively for that, वो खुद से आने लगेगा. ठीक है, so these kind of systems will be there and it will keep evolving also. तो थोड़ा उसको सोच के you can put things there जहां से रिटर्न आने लग सकती है. ठीक है, एंड इमरजेंसी फंड्स, इंश्योरेंसेस वो रखो, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस माइट कम, जहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा चले जाता है. एंड दैट्स वेयर इट कम्स कि इफ यू आर नॉट डूइंग चैरिटी एंड ऑल, तो समवेयर पैसा ड्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. So charity is actually going to make your heart clean. Maybe people will pray for you. Something magic will happen, and you will not suffer very big crisis in your life. Hello, sir. Your voice is breaking. Hello, hello, hello. Is it good, guys? Sir, your voice is breaking. Hello. Hello. Hello, team. Is the voice clear now? Hello. Hello, Akila. Hello, Suraj. Yeah, hello. I think sir is like rejoined with a couple of minutes. I think. Yeah. I guess you or Suraj may be the admin, means host. I think he will join in couple of minutes, maybe. Network issue.